मोजो यानी कि मोबाइल जर्नलिज्म। Here at the BBC, many of our journalists are using Android, a Windows phone or an iPhone. मोबाइल जर्नलिज्म डिजिटल स्टोरी टेलिंग का एक फास्टर और इजी मेथड है और इसीलिए दुनिया भर की ब्रॉडकास्ट कंपनीज इसको इस्तेमाल कर रही हैं। I'm a reporter with BBC 5 Live. Now, you need to use the piece of equipment that you've got. The piece of equipment that you've got and that I've got is a smartphone. CNN, BBC, RT न्यूज़ और अल जजीरा जैसी ग्लोबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी मोबाइल जर्नलिज्म के जरिए न्यूज़ कवरेज, रिपोर्ट्स और ब्रॉडकास्टिंग का काम शुरू कर चुकी हैं। Powerful broadcasting organizations are taking it seriously enough that they're equipping their already highly qualified camera crews with Mojo kits. I haven't at the moment got a big video camera with me, but I have got my smartphone in my pocket. Since 2009 has been on a smartphone. I've not used a single pro recorder since then. मोबाइल जर्नलिज्म खबर को बनाने का एक जदीद और मुनफरद तरीका है जिसके लिए आपका स्मार्टफोन आपका कोर प्रोडक्ट है। आप अपने मोबाइल फोन से जहां चाहें, जब चाहें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरों की एडिटिंग समेत मल्टीपल काम सरंजाम दे सकते हैं। But for telling a story, be it an indie film or a news report or even a family day out, you might be really surprised at the high definition output you can get from a phone, an app and a few accessories. फील्ड में काम करने वाले सहाफ़ी और रिपोर्टर हजरात खबर की कवरेज के लिए नॉर्मली लैपटॉप, DSLR और दूसरे कैमरास और उनका दीगर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, which is too sluggy and take too much time to broadcast the news. If you're a BBC journalist, the preferred way to record, edit and send your video, you could then save and file your recording directly into the newsroom systems. और वक्त के साथ साथ न्यूज़ पैकेजेस, शॉर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस जदीद दौर में smartphones are the heart of your mobile journalism. A smartphone has the potential to be a mobile news gathering device in your pocket. Explore, practice and get comfortable with many of these techniques and you'll soon be able to record and share great material.